begin with a poem by Maithili Sharan Gupta from Bharat and Bharti. So it's like हम कौन थे, क्या हो गए हैं हम, और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। So thank you, ma'am, for joining. So who don't know, Dr. Swapna Liddle is a famous historian. She has worked with Indian National Trust of Art and Culture Heritage. She has submitted a dossier to UNESCO. So she is a woman with a lot of talent. And apart from this, she is known for her heritage walks across Delhi. So welcome, ma'am. Welcome to our show. Thank you. The little verse that you quoted is very interesting, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अधूरी ही रहती है। हम लोग देखते रहते हैं कि भाई कैसे पता चले कि क्या हमारा इतिहास रहा है। और ये जो क्वेस्ट है हमारी, इसमें मैं भी शामिल हूँ और बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। जी, तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही जटिल विषय है और एक ऐसे शहर के बारे में है जो समय समय पर जिसके कई दीवाने हुए। किसी ने इसे नजाकत से रखा तो ये शहर खूब इटलाया, कभी लुटी तो कभी जली, वीरान दीवारें इसमें चीखती रहीं, फिर भी इसकी ऐसी दीवानगी रही कि 7 समुद्र पार से आया अंग्रेज भी इससे बच ना पाया। दूर सिंगापुर में बैठे हम वतनों ने इसे अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। चलो दिल्ली के नारे से ये सृष्टि गुंजमान हुई, आओ बात करें इस दिल्ली की। तो मैम, जैसे कि आप हेरिटेज वॉक्स करवाते हो, तो जस्ट चूंकि आप अभी घर पे हो एंड वी go into a Delhi metro mode where most of these sites are in the yellow line of Delhi. So we begin with that. So before we begin with it, मैम थोड़ा सा आप बताओगे हमारे ऑडियंस को कि what a historian does and what means how they investigate, they research and then they come to a conclusion. आजकल ये हो गया है कि हिस्ट्री तो खैर सब लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी ही तो है या हिंदी ही तो है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। बट यस, द historian's task of course is a very complicated task because it is not about just reading the source, it is about understanding how to read a source, how to understand it. You have to have a background in that particular period of history that you have studied a little bit. You have to know the historian's craft, the historian's tools, how a historian understands something. It is like saying कि देखिए मैं कितनी भी मेडिकल किताबें पढ़ लूं, अगर मेरी वो मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ। वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरियन का भी ये है कि ट्रेनिंग जरूरी है। और हाँ, मेरी ट्रेनिंग तो हुई है हिस्टोरियन के तौर पे, बट आई ऑल्सो आई थिंक मेन थिंग इज आई हैव नॉट टॉट, सो इन दैट सेंस आई एम नॉट अ मेनस्ट्रीम हिस्टोरियन। आई हैव mostly all my history work is the product of it is communicating with people who are not historians. तो मैं उतना students को पढ़ाती नहीं हूँ क्लास में, पर हाँ मेरी जो किताबें हैं उन थ्रू दोज या फिर जो मैं वॉक्स करती हूँ, मैं ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, मैं खुद ही लीड करती हूँ वॉक्स को, और उस वॉक्स के जरिए मैं पहुंचती हूँ स्टूडेंट्स तक और आम लोगों तक जो भी वॉक्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए मेरा जो काम है हिस्टोरियन के तौर पे, एक तो पढ़ाई करना है, और फिर वो जो पढ़ाई जो मैं कर लेती हूँ उसके बाद उसके बारे में किस तरह से मैं लिखूं या बोलूं, वो फिर एक आम पब्लिक को पहुंचता है। तो मैं एज पार्ट ऑफ योर हिस्टोरियन कोर्स और जो आप पढ़ाई करती हैं, तो आप पुराने किसी स्क्रिप्ट्स या लैंग्वेजेस को भी आपने पढ़ा है, और जैसे पर्शियन हो गया या उर्दू हो गई या और भी पुराने स्क्रिप्ट्स को डिसिफर किया है, उसमें वो भी इन्वॉल्व है इसमें? देखिए
हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जिस पीरियड की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस इलाके की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स आल्सो, दोज लैंग्वेजेस आल्सो. So, because my specialization was Delhi and my specialization was in the 19th century, मेरी जो PhD है, it's of the 19th century. So, for me, it is extremely essential to know Urdu. So yes, I know Urdu quite well. I studied it. I can, of course, read the script, understand it. A lot of my reading is in Urdu. I know I can small bits of Farsi also. I can understand. पर मेरे क्योंकि ज्यादातर सोर्सेज फारसी में नहीं थे, कम थे, तो बहुत ज्यादा आई हैव नॉट डन इन फारसी. बिसाइड दैट आई अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश तो है ही, बांग्ला भी मैं पढ़ लेती हूँ. ओके, सो मूविंग फर्दर मैम, मतलब इसमें फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपका क्या फिर इसमें कांटेक्ट रहा है टू स्टडी अबाउट दिल्ली, या मतलब जो साइट्स अभी रेलिवेंस में नहीं है बट दे वेर समथिंग ऑफ अ ग्लोरी इन द पास्ट, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजिट करना, वहां से उनसे रेफरेंसेस लेना, ये भी क्या आपके रिसर्च का पार्ट रहा है? मैं आपको अगर सही बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरी जो मॉन्यूमेंट्स की स्टडी है, वो दैट इज नॉट बीन माय मेन एरिया ऑफ एकेडमिक वर्क. वो मेरा एक पैशन कह लीजिए उसको, कि आई वाज इंटरेस्टेड, क्योंकि because I'm interested in history, I became interested also in the historic monuments, and together with that I became interested in trying to find out कि भाई इसको, I'm interested, I wanted people to also realize that it is important to preserve monuments. It's why these monuments are important. And that's why I started doing walks also. And that's why I started volunteering for INTAC. Because INTAC works to preserve old monuments and sites. तो वो काम करते हुए, doing those walks, doing work with INTAC, मेरा थोड़ा सा कनेक्ट फिर आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे खास तौर पे वो दिल्ली गवर्नमेंट का जो था, उससे ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने की. बट एज आई सेड कि ये मेरा एक पैशन समझ लीजिए इसको, वो है. एकेडमिक मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर ज्यादातर आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, आई एम अ हिस्टोरियन. ओके, सो मैम इसी से स्टार्ट करते हुए we'll talk about our first site. Actually, I borrowed this list from your book 14 Walks, and the first one is the Qutub Minar complex. Well, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स तो खैर अगर देखा जाए तो ये किताब जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले में लेट मी जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू दिस बुक. ये मेरी पहली किताब थी. इट वॉज कॉल्ड दिल्ली 14 हिस्टोरिक वॉक्स, और ये मैंने लिखी थी करीब 10-12 साल पहले. और काफी टाइम से ये दिस वाज आउट ऑफ प्रिंट, बट नाउ it's come out in another edition. So I would say that this walks book is called 14 historic walks of Delhi. And इसमें मैंने 14 walks ली हैं. I've taken 14 walks and I have done it's like a guide, you know, for somebody who may not be familiar with the monuments, may not be joining a guided walk. They can take this book, they can go to the site, and they can, with that book, explore the site on their own. So that is the aim of the book. And the walks kind of go sort of in a chronological order, because they start with Qutub complex. Qutub complex, why that comes first? Because that is really one of the oldest continuously inhabited parts of Delhi. तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर इफ यू गो टू कुतुब कॉम्प्लेक्स, वहां पे आप वो मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, वहां पे आपको एक तरफ तो गुप्ता ईरा पिलर भी मिलेगा जो 4th सेंचुरी का है, हाँ, समथिंग लाइक दैट. आई मे बी हिस्टोरियन, मैं कई बार डेट्स में बहुत गड़बड़ा जाती हूँ, बट एनीवे, तो दिस you will see the Gupta era pillar also,
बट यू विल ऑल्सो सी हर ईरा, दिल्ली की हर ईरा, चाहे वो सल्तनत हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो ब्रिटिश भी हो 19th सेंचुरी में, हर ईरा के हमें वहां पे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप कुतुब मीनार को अच्छे से समझेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द कुतुब मीनार वेल, if you explore that site well, if somebody explains the site to you, and my book does that, it tries to explain the site to you, so you will be able to understand कि ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझने के लिए कि हमारी जो हिस्ट्री है, किस तरह से दिल्ली की हिस्ट्री डेवलप हुई है पिछले 1000 साल या ऑलमोस्ट 1000 साल से, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें काफी कुछ उसमें समझ में आ जाता है। सो देयरफॉर आई थिंक दैट कुतुब कॉम्प्लेक्स वॉक इज रियली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस। और मैं तो ये कहूंगी कि जो भी दिल्ली में रहते हैं मस्ट गो एंड सी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले वहीं जाएंगे। आई थिंक वहां पे आयरन पिलर वहीं की आप बात कर रहे हो जो गुप्ता एरा का एज का है, और इट हैज नॉट रेस्टेड सिंस देन। जी जी बिल्कुल। ओके, एंड देयर इज अ मिथ आल्सो कि मतलब if somebody stands behind it and tries to put their arms around it, they are not able to do that. या तो ये इस टाइप की जो बिलीव्स होती हैं, ये पॉपुलर बिलीव्स होती हैं। लोग जब किसी चीज को देखते हैं, they in their own minds they make up these things, right? So these are beliefs that kind of prop up on their own. एंड ये जो कुतुब मीनार के जो पिलर है, आयरन पिलर, अब तो खैर उसके चारों तरफ रेलिंग लगा दी, तो यू कांट डू दैट, बट अदरवाइज द वन ऑफ द बिलीव्स वाज कि अगर आपने पीछे अपने हाथ किए, एंड इफ यू कैन काइंड ऑफ इफ यू कैन grab it, if you can extend your arms all around it, then you are a you are destined for greatness. And वो जो superstition है वो आता कैसे है? These are also very interesting questions to answer. देखिए पहले क्या होता था कि in the pre-modern age आप कैसे समझे जाते थे? आप you're a great warrior, आप बड़े योद्धा हैं, कैसे समझा जाता था? अगर एक शब्द है जो अर्जुन के लिए भी बोला जाता है, बहुबाहु। बहुबाहु का मतलब क्या है? जिसके आर्म्स बहुत लंबे हैं। अब आर्म्स लंबे होने से आप योद्धा कैसे हो गए? वो इसलिए बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ अ बो एंड एरो, इफ यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम अ बो, if you can pull it back very much, then you can shoot it further and faster. So if you have long arms, you are a great warrior. तो इसीलिए सोचा जाता था कि अगर आपके बहुत लंबे आर्म्स हैं और आप बिल्कुल पीछे तक उसको पकड़ सकते हैं, देन यू आर अ ग्रेट वॉरियर, यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। सो इस टाइप से ये सुपरस्टिशंस आ जाते हैं। तो ये तो पॉपुलर बिलीफ की बात होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट साइट मैम, इट्स तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद के बारे में मैम कुछ बताइए। तुगलकाबाद इज अ ग्रेट साइट बिकॉज दिल्ली में इतने सारे किले हैं, बट दैट इज रियली द बिगेस्ट ऑफ द साइट्स। इट्स लाइक अ ह्यूज, इट्स सच अ इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट। इतने बड़ी फोर्ट है, इतना इम्प्रेसिव है। सेकेंडली द अदर थिंग इज कि उससे कनेक्टेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी सारे लेजेंड्स नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप किताब क्यों पढ़ेंगे, किताब तो भी पढ़नी है आपको। पर ऐसा है कि सबसे जो इंटरेस्टिंग लेजेंड्स है वो निजामुद्दीन औलिया से कनेक्टेड है वहां पे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया और जो जिन्होंने बनाया था ये किला, रियासुद्दीन तुगलक, they had a kind of confrontational relationship, right? They confronted each other, they challenged each other. तो उससे कनेक्टेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो तुगलकाबाद के किले से कनेक्टेड हैं। तो वो जो साइट है बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत उसमें एक तो चीज है कि वाइल्ड लाइफ काफी है। अगर आप जाइए तो यू कैन सी अ नील गाय, यू कैन सी लॉट्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड ऑल आल्सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट। I only remember Muhammad bin Tughlaq, and he had taken a lot of decisions like shifting the capital, then currency. तो still अभी भी पंच में कहा जाता है कि तुगलक हो गए हो क्या? तो हाँ, मोहम्मद तुगलक का भी थोड़ा सा उसमें कनेक्शन है क्योंकि इनफैक्ट उनकी कब्र वहीं पे है, जिसको गियासुद्दीन तुगलक का टूम कहते हैं। उसमें मोहम्मद तुगलक इज ऑल्सो बेरिड इन दैट सेम टूम।
Okay. So our next site is Satpura and Khidki. Well, yeah, that is an interesting thing also because उसका connection भी मोहम्मद तुगलक से है, the Okay. सतपुला particularly. और अगर आप देखिए एक तो चीज ये किताब में ऐसी है कि अगर आप एक एक करके वॉक्स देखें तो आपको अलग अलग जो दिल्ली के सिटीज रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट मिलता है. सो दिस इज द सिटी विच इज कॉल्ड जहापना. जहापना में ये सतपुला पड़ता है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. लोग उस एरिया को काफी अच्छी तरह से जानते हैं. आजकल खिड़की वो मॉल्स बन गए हैं तो लोग तो काफी जाते रहते हैं, बट आई डोंट नो कितने लोग वो मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं. और वो मॉन्यूमेंट्स में एक वेरी इंटरेस्टिंग एक डैम भी है, सतपुला जिसको कहते हैं, वो एक डैम है. और मॉस्क भी ऐसी है कि वो बिल्कुल दूसरी दिल्ली की मस्जिदों से काफी अलग है बिकॉज इट्स कवर्ड. बिकॉज ज्यादातर दिल्ली की मॉस्क जो है वो दे आर ओपन कोर्टयार्ड, बट दिस वन एक्चुअली इज लार्जली कवर्ड. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट. सो इट्स वन ऑफ द लेस वेल नोन places I think to visit. Okay. Next on our list is Hauz Khas. मतलब I know Hauz Khas only by the name कि वहाँ दिल्ली मेट्रो का सबसे deepest station है. Okay. If you can shed more light on it. Yeah. Hauz Khas actually is a place where ज्यादातर लोग जाते हैं. वहाँ पे विलेज में जाते हैं फॉर शॉपिंग और फॉर visiting the restaurants and pubs and all that, but it is a very interesting site because it has it's a historic site. वहाँ पे इनफैक्ट वो जो सिटी है बिल्कुल सिरी जो एक सिटी होता था, वन ऑफ द सेवरल सिटीज ऑफ दिल्ली, उसके बिल्कुल पास में बना हुआ था. ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर बनाया था, हौज खास जिसको कहते हैं. उसके साइड पे the Emperor Firoz Shah Tughlaq, he built a big college. He built a big college there and he built his own tomb there also. So that is the significance of the place and the monuments are very interesting. और it is one place जो कि आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि 14th century में एक कॉलेज कैसे चलता था. What were the rooms, कहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, कहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, किस टाइप के एटमोस्फियर में वो पढ़ते थे. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट टू सी. आप खिलजी की बात करती है तो मुझे कुतुब मीनार के सामने भी एक किस्सा याद आता है कि वहाँ कुतुब मीनार के सामने ऑल्सो ही ट्राइड टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट just paralleling Qutub Minar and tallest Qutub Minar, but he was not able to complete it, right? Yeah. एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को साउथ इंडिया में काफी बढ़ाने की कोशिश की, काफी सक्सेसफुल भी रहे वो. सो he saw himself as a great empire builder. And you know, ऐसा है कि आजकल हम लोग सोचते हैं कि पब्लिसिटी जिस तरह से करते हैं लोग, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, व्हाटएवर, बट उस जमाने में भी पब्लिसिटी होती थी. ये सब जरिए नहीं थे, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, आप न्यूज़पेपर में ऐड नहीं डाल सकते थे, यू कुड नॉट हैव टीवी, बट यू कुड स्टिल डू योर पब्लिसिटी बाय बिल्डिंग बिग मॉन्यूमेंट्स. सो ही डिसाइडेड कि ही विल बिल्ड दिस ग्रेट विक्ट्री टावर टू शो how what a great conqueror he was. But yes, of course, he died before it could be completed. तो उसके बाद किसी ने उसको complete नहीं किया, तो इसलिए वो एक अधबनी लाट कहते थे उसको. It's like a half-made pillar. It's called the Alai Minar today. So that is part of its legacy. Okay. So moving forward, next on our list is Lodi Garden and Safdarjung tomb. So Safdarjung, I know he was मतलब एक तरह से वजीर की तरह से थे, फिर अवध भी चले गए थे, तो क्या किस्सा है मैम? ये उस 18th सेंचुरी की बात है कि जब मुगल एम्पायर वाज काइंड ऑफ स्टार्टिंग अ डिक्लाइन, और उस समय ये जो उभर के आते हैं सफदरजंग, ही इज अ कमांडर, वो अवध के गवर्नर भी हो जाते हैं और साथ ही साथ उनको वजीर ऑफ द एम्पायर का भी टाइटल मिल जाता है. अहमद शाह जब थ्रोन पे थे, द मुगल एम्परर अहमद शाह. तो यस, ही इज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन दिल्लीज हिस्ट्री, बट of course we know him best because of the tomb, because when he died the tomb was built for him. And
that is, the tomb is big enough, but I combined it with the Lodi Garden Walk, because Lodi Garden Walk is also very interesting because it has all these tombs जो कि Lodi period के, Sayyid period के tombs हैं, उसके में फिर then you have some other structures जो कि मुगल काल के भी हैं, and of course because it is a garden, it has these birds and things like that, so various trees, other kinds of plants and gardens, so it's a very interesting place to visit. और garden भी बहुत historic है, so therefore I thought कि ये दो चीज combine करके, because काफी पास ही है वो, it would be a good place to so it's a good walk to do, and a lot of people actually do that walk also, but I thought कि इसको include करना बहुत जरूरी है. A walk to remember. Yes, it is. It is a walk to remember. Moving forward, we have पुराना किला. तो पुराना किला, I think जब आमिर खान के मूवी पीके आई थी, तो after that people started going it quite often. कुछ ऐसा भी मैंने सुना कि पहले लोग it was abandoned, but अभी quite often people used to visit it, and मतलब ऐसे भीड़ भाड़ रहती है. तो कुछ बताइए उसके बारे में. Well, abandoned तो नहीं था, लोग तो जाते ही थे, बट मुझे याद है कि जब हम करीब 25 साल पहले अगर जाते थे तो वहां पे काफी there were a lot of monkeys, there was a lot of undergrowth and all, but वो काफी टाइम से वो ठीक हो चुका था, so that was not an issue. It was, you see what happens is कि जब इस टाइप की popular movies बनती हैं, then people, of course, a lot of people who are not interested, otherwise interested in monuments, who are not otherwise interested in monuments, sometimes become interested. So yes, of course, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, but otherwise पुराना किला तो बहुत ही well known है, उसका संबंध हुमायूं से है, उसका संबंध शेरशाह से है. एक बहुत ही strong popular belief ये रहा है कि वही साइट है इंद्रप्रस्थ का, जहां पे पांडवों ने एक शहर बसाया था. तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन भी हुआ है, जिसमें करीब 2000 साल पहले तक की, नहीं उतना तो नहीं, 1700 साल पहले तक की हमें आर्टिफैक्ट्स वहां से मिले हैं. ओके मैम, आप तो येलो लाइन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा और निजामुद्दीन पे आते हैं थोड़ा सा. निजामुद्दीन मैं दो साइट्स को कंबाइन करूंगी, जैसे मैंने अलग अलग उनके बारे में लिखा है, हुमायूंस टूम एंड निजामुद्दीन, क्योंकि वो बिल्कुल आसपास है, आमने सामने है, पर क्योंकि दोनों साइट्स इतनी रिच हैं, उनमें दो मैंने वॉक्स कर दी. एक तो निजामुद्दीन जो दरगाह का साइट है, क्योंकि दरगाह बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे कई सारी ग्रेव्स भी हैं, चाहे वो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह की हो, ऑफ कोर्स निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो का मजार वहां पे है, और वैसे ही काफी इंटरेस्टिंग गालिब जो शायर थे हमारे, उनका मजार भी वहीं पे है. तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग वहां पे बिल्डिंग्स हैं. और हुमायूंस टूम तो दिल्ली के 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है. आजकल तो लोग बहुत जाते हैं, हुमायूंस टूम बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो उसका जो कंजर्वेशन जो गार्डन का हुआ, उसके बाद टूम का कंजर्वेशन हुआ, उससे आई थिंक लोगों को बहुत उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया. तो इसलिए हाँ, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉक है. तो मैं ये बता दूं कि कई सारी ये जो साइट्स हैं जो कि काफी वेल नोन है. अब लोग ये पूछ सकते हैं कि आपको किताब लिखने की क्या जरूरत है इसमें, ये तो अगर आप इंटरनेट पे भी जाइए तो आपको हुमायूंस टूम के बारे में काफी कुछ मिल जाएगा. तो इसमें मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगी. एक तो ये है कि बिकॉज द वे आई हैव डिजाइन्ड द वॉक इज लाइक इन द बुक is as if I am leading the walk. तो जो हम लोग क्या करते हैं, we go into the Humayun's tomb and आप देखेंगे you enter through the gate and everybody goes absolutely straight to the tomb. Now, when I lead a walk, I don't go straight to the tomb. I go from the side because there are some very interesting features in the garden also that you should see before you get to the tomb actually. Okay. So main thing in my book is that I have laid out certain routes
जो रूट को, अगर आप उस रूट को फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो दैट रूट, इफ यू सी व्हाट आई एम सेइंग, and usme in the book there are of course maps also which help you to navigate it. If you follow the route, then you understand all the bits, क्योंकि what happens is कि गार्डन जो था उसमें पानी कैसे आता था, हाउ डिड द वाटर फ्लो, ये सब चीजें आप अगर in one order if you are explained, then you understand the garden a lot better. So I think जो अगर आप बुक के आजकल बोलते हैं यूएसपी, तो यूएसपी यही है कि वो इस तरह से आपको गाइड करेगी कि as if somebody is leading a walk, as I, at least I, as I am leading a walk for you. So that I think is the most important part of that book like that. And therefore I thought that even these well-known sites like Qutub Minar or Humayun's tomb, they need to be explained in a systematic manner, how you walk through it. So that is what I thought should be included. So as I said, Humayun's tomb, everybody understands it's a very important tomb. There's a lot written on it, but I think I have written it in a slightly different manner. The other thing that I must say, that which I think this book is kind of one of the things I tried to bring in here is a lot of quotations from different sources. So for instance, I used to कि कोई 17th century का traveler था, उसने क्या बोला है इसके बारे में, how did they see it, what did it look like in Mughal times. So उसके मैंने I've tried to include some of those insights also. Okay, ma'am. So now the next site is the Twist with Destiny side, and that is our Red Fort. So please, ma'am. Well, Red Fort to मुझे, I will combine again these two things, Red Fort, Chandni Chowk, क्योंकि ये जो एक two, in fact there are three in that area. अगर आप पुरानी दिल्ली की बात करें तो रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, these are all part of the 17th century city of Delhi, जो हम लोग many cities of Delhi की बात कर रहे हैं, very important part of that particular city जिसको आप शाहजहानाबाद भी बोलते थे. So these are all part of that city, and I think for me that city is very very close to my heart, because मेरी जो PhD थी वो 19th century पे थी, 19th century दिल्ली पे थी, और वो उस जगह की दिल्ली की थी, the शाहजहानाबाद. उस टाइम पे दिल्ली meant शाहजहानाबाद. So therefore a lot of my academic work was done for that. मैंने PhD की रिसर्च उस पे की थी. मैंने एक किताब लिखी उसके ऊपर जो कि अभी इसी साल निकली, बल्कि The Broken Script. तो वो it is about how what Delhi was like during the 19th century when the East India Company was ruling Delhi, and at the same time the Mughal emperors were also on the throne and they used to live in the Red Fort. Then the other book that came out again this year was on a map of the Shah Jahanabad, which was drawn in about 1846 or so. So that other book also came out this year, and therefore I think my maximum amount of work that I have done has been on this city. As I said, Broken Script, Shahjahanabad mapping a Mughal city, और मेरी एक पुरानी, उससे भी पुरानी बुक है which is called चांदनी चौक. हाँ, तो ये तीनों किताबें मेरी इसी साइट पे हैं, पर सब किताबें थोड़ी सी अलग हैं, थोड़ी सी नहीं, काफी अलग हैं, उसमें ओवरलैप काफी कम है, सिर्फ साइट का कॉमनैलिटी है, बट कंटेंट तो सब किताब में अलग ही है. तो this book, जो 14 historic walks है, there are 3 walks in this area, और चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो कश्मीरी गेट हो. I have again tried to talk about the history of this place, how it has evolved, what has happened, and then of course lead the walker through these sites by giving them very very clear instructions कि आपको किस तरह से कहाँ जाना है. तो यही I think इस किताब की बात है कि सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री भी है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉन्यूमेंट्स के एक से दो गिनती कर दी. It is not a list of monuments. It is a overview of the history of the site also, but it is also a guide through these sites. Another thing that I think I should point out here is that one thing that this book does is कि आपको जो buildings है, historic buildings है, उसके जो architectural features है, उसके बारे में भी थोड़ा सा explanation देते हैं. So I have included जो architectural features हैं उनकी एक पीछे list बनी हुई है, glossary है, glossary के साथ में photos भी लगी हुई हैं ताकि आप समझ पाएं कि जब हम किसी चीज की बात करते हैं, कोई चीज की बात करते हैं, अगर हम छज्जे की बात कर रहे हैं, छतरी की बात कर रहे हैं, जो भी चीज की बात कर रहे हैं वो चीज है क्या, what is that feature, so that जो ना जानते हो they can understand it, they can understand these architectural features with the help of the books also. एक मिनट में बोलूंगी, certainly I have seen a comment pop up which says, can you explain a bit about Shahjahanabad in brief, what is all in the book? So if you're talking about the map book of course has this 1846 map, which is a very detailed map of Shahjahanabad, and this is all about taking each part of the map and discussing it. And also map mein jo originally the all the inscriptions, that all the legends were written in the Urdu script, wo maine अंग्रेजी में लिख दिए हैं, so you can read the map for yourself and explore it. My other books, as I said, Broken Script is about again Shahjahanabad, but Shahjahanabad jo ki what is the political and cultural and other developments that were happening in this city when the British East India Company was ruling it and the Mughal emperors were there. And of course, Chandni Chowk is again also about Shahjahanabad, but it's about uske banne se, when it was founded in the 17th century, leke up to independence, uski kya history rahi hai. That whole history is in a very short introductory, not very short, but like 200-page introduction to that whole history. That is what these books are about. Sorry, so that was a little digression. No problem. Actually, I was going to show, I have this book, Chandni Chowk. So yeah, so as ma'am explained, yeah, it has every detail, and she goes through, like you are seated in a time travel machine, and you go through the eras, you go through the kings, you go through the situation, you go through the commerce, you know how people felt, how the festivals were celebrated. Yeah. So this is a complete book. If you want to read about Chandni Chowk, you can purchase this book. Okay, ma'am. So I think you covered Kashmiri Gate and everything. Last but not the least, we have Mehrauli Archaeological Park and the Central Vista Walk that you do. Yeah. Mehrauli Archaeological Park, again, I think uski baat jo karte hain, so it should be done together with Mehrauli village and Qutub Minar, because again, it is part of that Mehrauli very historic area, जो कि बहुत अगर पहला जो दिल्ली का सिटी अगर देखें, which is extant, which is the लाल कोट जिसको कहते हैं, वो तोमरों के टाइम से उसके even the walls of that city are still visible in the Mehrauli Archaeological Park. And there are buildings which are like from various Sultanate dynasties, Lothis, etc., and then coming right down to, of course, the Mughals also, but down to the British in the 19th century. So it's a long, you can see all across section of Delhi's history in both Mehrauli Archaeological Park as well as the Mehrauli Village Walk, which are both of them are included kind of separately, but interestingly, but they are all both there. So these are of course very interesting. And lastly, Central Vista. Central Vista is of course about the last city that was built in Delhi, which is New Delhi. जो कि British built this city after they shifted the capital from Calcutta. So this is the kind of center of that new city that the British built, and they called it Central Vista. ये जो one road which connected the Purana Killa to
this Rashtrapati Bhavan, which we call Rashtrapati Bhavan. They called it Viceroy's House, and the road was called Kingsway. So this was a central vista. The whole, पहले तो central vista अगर हम समझ लें तो ये जो phrase है इसका मतलब ही ये है कि एक end से दूसरे end से आपको एक vista नजर आता है, एक नजारा नजर आता है. You have a vista, you see from one end to the other. So it's like a broad line of sight. You can see on either end. One side you can actually see India Gate, and on the other side you see Vijay Chowk, Rashtrapati Bhavan, and the secretariats. So that is Central Vista. It's one of probably the longest walk in this, and I have suggested कि अगर आपको ये बहुत लंबा लगता है कि you can do part of it, of course, in you can do part of it by a public transport or some, not public transport, but by a three-wheeler or a car or something like that. But it's interesting because एक side पे, of course, you have all the government buildings which are Rashtrapati Bhavan, secretariats, etc. And the other side you have all the princely palaces, Bikaner House, Hyderabad House, all of those. So you can actually see all of these important buildings over there. So the last city of Delhi. I can see that there are some questions that have come. I may have missed some of them. If you will point out what they are, I can answer them. Yeah, so there were a couple of questions like how did the invasions change the Delhi? Like how did it impact Delhi? Well, of course there have been invasions. तो काफी टाइम से चाहे आप वो तैमूर का invasion देख लीजिए in 1398 या फिर आप अहमद शाह अब्दाली or you see Nadir Shah, all of these have had their impact. I have talked about them in Chandni Chowk, some of the ones which happened after the founding of Shahjahanabad. So that, yes, of course, they have all sorts of impact, mostly on the population and the prosperity of their their lives and their property. So that has been the major impact that such invasions have had, really. There is one such incident that you also mentioned in your book. That fort had, the throne room was adorned with silver. And Nadir Shah ka we know that peacock throne and Kohinoor was taken away. But during the Abdalis invasion, right, when the Marathas were there, then they removed the silver to mint the coins. So those kind of impact. Those kind of things, of course, kept happening. Yeah. Okay. So there was a question about Lal Kot, I guess. Like the person wanted to know about Lal Kot. What did they want to know? What is the question? Have you seen it? Sorry, I can't see it. Yeah, the question was regarding Lal Kot. She wanted to know a brief description about Lal Kot. They have read a lot of resources. Yeah. Lal Kot was built in about 1052 or so, 1052 by the Tomar king Anangpal II. And it's a fortification. Uski abhi bhi thodi bahut walls baki hai. It's you can see the walls, either you can see it on Adham Khan's tomb, just under Adham Khan's tomb in Mehrauli village, or you can see it in the Mehrauli Archaeological Park also. That was the first site जिसमें नाम दिल्ली का पड़ा. Okay, तो दिल्ली वहीं से जानी गई लाल कोट से. हाँ, उससे पहला नाम दिल्ली का वही उसी जगह को मिला. Okay. And I think there was one more question about Shahjahanabad only. So the person wanted to know about its morphology. In what sense? Can you please? The morphology of Shahjahanabad, again, वो तो इतना बड़ा है कि उसमें the whole book Shahjahanabad is about the morphology and history of Shahjahanabad. And one thing that I've written about in that book is that Shahjahanabad is a
is a, like, it tells us about how, apart from anything else, it tells us about Mughal town planning. What are the town planning principles that are specific to the Mughals? What is the sensibility? What is the ideology? What is the kind of social structure that the Mughals, through their uh, through this building of Shahjahanabad, what are they catering to? I can suddenly see a question pop up. What is the etymology of the word Delhi? इसमें बहुत सारी speculation हुआ है, राजा दिलू ये वो, I don't know. कोई इसमें एक मत नहीं है. There is no one opinion as to how this word Delhi finally, first came about. So I have no answer to that. Sorry. और क्या था सवाल? Please, if you have any. वो असल There's a personal में question from me. yeah. Okay, so means during the recent floods in Delhi, means there was a picture going around the internet that Yamuna used to flow that fort. मतलब कुछ ऐसा डायरेक्शन दिखाया गया था कि ये जो अभी बह रही है Yeah. during the floods, it is the same as it used to flow before. So how Yeah. much truth is in that? Oh, very true. The Yamuna once used to flow right next to the Lal Killa. जहाँ पे ring road है अब, वहाँ पे यमुना बहती थी. But the Yamuna changed its course. So ऐसा होता है नदियों के साथ. They sometimes change their course, and so the river has changed its course. So the problem is कि हमने अब इतना वो flood plain पे there has been so much construction कि इस टाइप का flood का आना और फैल जाना पानी का, that is become more likely. So I think that is a lesson to us कि हम लोग flood plain के ऊपर इस तरह से encroachment ना करें. We should not be building on the flood plain. Okay, so I'm yeah. sorry, मुझे वो सवाल निकले जा रहे हैं पर मुझे दिख नहीं रहे. अगर आपको मालूम हो तो मुझे Yeah. बता दें प्लीज. तो वही वो लाल कोट पे ही था मैम का सवाल कि हाउ लाल कोट इज रिलेटेड टू करंट दिल्ली. Current Delhi, it's around it's right next to it's in Mehrauli. तो है तो अभी भी है, वही कनेक्शन है अभी भी. Okay. Then moving on, ma'am, from 1857 till 1911, right after the Britishers took over the part, right? So they made Calcutta their capital, and then 1911 they came back with the Delhi Darbar to celebrate, commemorate the King George V. तो उसमें आई हैव हर्ड इंसिडेंट कि बहुत वो किंग ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट था मैम. सो कैन यू शेड हाँ, मोर लाइट? इट्स वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये है कि 1857 में दिल्ली नहीं आए अंग्रेज तो बहुत पहले आ चुके थे, 1803 में आ चुके थे. और कलकत्ता में तो उससे भी पहले आ चुके थे. बट यस, द दिल्ली दरबार्स ऑफ कोर्स वर हेल्ड. अगेन इसकी कहानी बहुत ही लंबी है, अगर मैं इसको बताना शुरू कर जाऊं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. इनफैक्ट एक एग्जीबिशन जो अभी भी चल रहा है, जो डीएजी में चल रहा है, डीएजी आर्ट गैलरी जो है जनपथ पे है, राइट नेक्स्ट टू मेरिडियन होटल, उसमें दिल्ली दरबार्स के ऊपर एक एग्जीबिशन हो रहा है, which myself and the historian Rana Safvi, we have curated this exhibition. So those who may be interested might go and see it there. The story of the Delhi Darbars, uska kya significance hai. But yes, Delhi Darbar was an interesting it was an interesting institution. 1911 का जो आखिरी दरबार है, there is the story of Maharaja of Baroda that he was a little disrespectful. फिर बाद में it was said कि नहीं I did not mean to be disrespectful. ये बस हो गया थोड़ा सा, it was a misstep. But I think more than that, the most important thing of that darbar is कि उस दरबार में announcement होता है कि Delhi will become now the capital of British India. And तब से Delhi has become the capital. The next year it became the capital. From 1912 onwards, the capital was shifted from Calcutta to Delhi. और तब से लेके आज तक continuously Delhi is the capital. So for Delhi, that is an important milestone, the 1911 Darbar. ओके, सो वही है जो हमने हिस्ट्री कवर की कि कई बार कई उसके दीवाने आए
लाइक शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया तो वो उससे प्रिजर्व किया, गुप्ता ने ये किया, तो कभी अब्दाली भी आया, कभी नादिर शाह भी आया इसे लूटने के लिए, फिर अंग्रेजों ने इसे अबैंडन ही कर दिया। कुछ हाँ, एक फेमस शेर भी है आई थिंक इस पे, मिर्जा गालिब का, जब आफ्टर 1857 ना उसके आफ्टर मार्थ पे, मैम उसके बारे में अगर आप बता सके तो, कि मतलब आफ्टर द ब्रिटिशर्स टुक ओवर आफ्टर द रिवोल्ट, तो मींस the city was abandoned, people were killed, then out of agony he wrote a share on it. उन्होंने शेर ही नहीं काफी चिट्ठियां लिखी है, बहुत कुछ लिखा है. सो आई एम नॉट श्योर विच वन यू आर रेफरिंग टू, बट ही हैज ऑफ कोर्स रिटन अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली. उतना शेर तो कम ही लिखे हैं, पर हाँ चिट्ठियों में बहुत जिक्र है. एक उनकी स्पेशल डायरी है जिसको दस्तंबू बोलते हैं, फारसी में लिखी थी उन्होंने, और दैट इज अ काइंड ऑफ अ अकाउंट ऑफ द रिवोल्ट. मैं एक क्वेश्चन देख रही हूँ यहाँ पे, सोशल political and social changes in Delhi in the 18th century and after 18th century. 18th century तो मैंने बहुत ही सरसरी तौर पे I have in brief written about in my book चांदनी चौक, उसमें थोड़ा बहुत जिक्र है. And after 18th century माने 19th century में तो as I said कि मेरा काफी काम रहा है, जो कि ब्रोकन स्क्रिप्ट जो किताब है उसमें पूरा 19th century में जो दिल्ली थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द लास्ट मुगल एम्परर्स, क्या उनमें रिलेशनशिप था, ऑल अबाउट 1857 ऑल्सो इन दैट बुक, के जो रिवोल्ट 1857 का था वो दिल्ली में क्या उसका असर पड़ा, what changes that, you know, what did it mean, how did people live during that 1857 revolt, कौन ब्रिटिश के साथ था, कौन ब्रिटिश के साथ नहीं था, क्या लोग कर रहे थे, क्या लोग सोच रहे थे, उसके बाद क्या पोइट्री लिखी गई 1857 के बारे में. तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जॉनर है पोइट्री का, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं. उसको शहर आशोक बोलते हैं. उसमें काफी कुछ दिल्ली के बारे में, क्या जो चेंजेस आए 1857 के बाद, उसके उसके बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है. फॉर इंस्टेंस एक जो बहुत बड़ा चेंज आया 1857 के बाद कि द ब्रिटिश डिमोलिश लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी. तो काफी कुछ रेड फोर्ट के अंदर जो हम आज बिल्डिंग्स देखते हैं, दे आर अबाउट लाइक लिटरली जस्ट 5% और लेस ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वर देयर इन द रेड फोर्ट, वो ब्रिटिश ने सारी डिमोलिश कर दी. और उसके ऊपर एक शेर है, एक पोएट थे कादिर बख्श साबिर, उनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, पर उन्होंने एक शेर लिखा, मस्के बेदाद से टूटे हैं मकाने दहली, हो रकम खते शिकस्ता से बयाने दहली. उसका मतलब ये हुआ कि द वे द buildings of Delhi have so unjustly been demolished, it is right that we should write the account of Delhi in the broken script. एक खते शिकस्ता एक स्टाइल है फारसी में लिखने का, उसको के खते शिकस्ता में दिल्ली का हाल लिखा जाए. तो ये खते शिकस्ता जो कि ब्रोकन स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट उसी ब्रोकन स्क्रिप्ट खते शिकस्ता के ऊपर ही मैंने किताब का नाम भी दिया, विच इज कॉल्ड द ब्रोकन स्क्रिप्ट. तो इस तरह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट काफी रहा है 1857 और उसके बाद का. There is one question कि tell us about that poem on Delhi Darbar by Judge Allahabadi. उसका बहुत ही ब्यूटीफुल उसकी एक कविता है, और मेरे पास इस वक्त उसके सारे शब्द नहीं है, बट बहुत सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा. बहुत क्या बतलाए क्या क्या देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा. और वो आप बोलते हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा, तो यमुना जी के पाठ को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा. लाट मतलब दिस थिंग कुतुब मीनार, हाँ, सबसे ऊंचे लाट को देखा. हजरत ड्यूक कनॉट को देखा. ड्यूक ऑफ कनॉट had come to the 1903 दरबार. तो उससे तो उन्होंने इस तरह से, यही मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है. बट देयर इज अ वेरी लॉन्ग पोएम बाय अकबर इलाहाबादी जो कि दिल्ली दरबार 1903 के बारे में डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से हुआ. एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें एक वो है कि है मशहूर एक ऊंचा बरसत, बॉल में नाची लेडी करसन.
because Lady Curzon was the wife of the viceroy. So she danced in the ball that was held there. So it's a very funny poem also, a lot of humor. Okay, so moving on. There are lot of incidents. मैम एक बुक और आपकी आई थी कनॉट प्लेस, जी, उसके बारे में आप कुछ बताओगे? कनॉट प्लेस, हाँ, उसका the whole sorry, just before I go on to that, एक जो क्वेश्चन आया, can I name the poet please? अकबर इलाहाबादी. अब शायद उनका अगर होते तो अकबर प्रयागराजी होते, बट है वो अकबर इलाहाबादी. सो यू कैन लुक इट अप. बट हाँ, कनॉट प्लेस इज एक्चुअली अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, कि ये जो अंग्रेजों ने जो शहर बसाया न्यू दिल्ली, हाउ डिड दे बिल्ड इट, व्हाई डिड दे बिल्ड इट? So that is what the story is all about. And there again, the story is a very interesting one. कि किस तरह से शिफ्ट हुआ कैपिटल, क्यों शिफ्ट किया, ब्रिटिश के दिमाग में क्या पॉलिटिक्स था, किसने क्या बोला, वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें एक, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी क्योंकि आप किताब पढ़िए, बट एक चीज जो आई थिंक आजकल, क्योंकि कई लोगों ने वो किताब पढ़ ली है तो लोग जानते भी हैं कि पंडारा रोड का नाम पंडारा रोड क्यों पड़ा. और जो जानते हो प्लीज अभी स्पॉइलर नहीं दीजिए, नहीं बताइए, बट रीड द बुक एंड फाइंड आउट. ओके मैम. एंड एक बहुत ही यूनिक ट्रेंड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट चला था कॉफी हाउसेस का. हमने इलाहाबाद या प्रयागराज में भी इंडियन कॉफी हाउस देखा, और ये मैं दिल्ली में भी पाता हूँ, कनॉट प्लेस पे एग्जैक्टली पाता हूँ इंडियन कॉफी हाउस का. तो इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? Coffee house has been a trend ke there are people who progressive thinkers, artists, writers getting together and discussing in coffee houses, and therefore because there were these progressive elements, and of course these were also people who fought for freedom, who were involved in that. So yes, around the country coffee houses have been a gathering place for people. But एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉफी हाउस जो हम लोग आज कॉफी हाउस सोचते हैं, और फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप, कहवे खाने, जो कि फारसी है कॉफी हाउस के लिए, ये कहवे खाने मुगल दिल्ली में भी हुआ करते थे. और अगर आप चांदनी चौक मेरी किताब पढ़े, उसमें आपको याद होगा मैंने कहवे खानों की भी बात की है, जहां पे उन दिनों में पोएट्स गैदर करते थे, पोएट्स भी वहां पहुंचते थे, शायर पहुंचते थे. The poets used to get together and they used to recite their poems and have their discussions among each other. क्योंकि कोई भी क्रिएटिव पर्सन होगा, वो दूसरे क्रिएटिव पर्सन लोग हैं उनसे मिलजुल के, उनसे डिस्कशन करके उनकी फिर क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ती है. तो इस टाइप की जो फोरम्स होते हैं वो बहुत जरूरी होता है किसी क्रिएटिव सोसाइटी के लिए. मैम एक रैंडम क्वेश्चन है अबाउट स्किनर्स रेजिमेंट. ये बहुत नाम सुना हुआ है कि अभी भी करंट आर्मी में यूज होता है, और मतलब कुछ इसका बैकग्राउंड आप बता सकते हो? ये स्किनर्स हॉर्स, ऑफ कोर्स, सारा जो इसकी जो हिस्ट्री है वो एक आदमी से कनेक्टेड है, जेम्स स्किनर. जेम्स स्किनर का फादर ब्रिटिश था, उसकी मदर इंडियन थी, और वो मराठा जो सरदार थे सिंधिया, उनकी फौज में था. He was in their army, and then he came into the British army later when मराठों की जो फौज थी, it was very dominated by the French. So they kind of, when they started fighting with the British East India Company, they said कि all these British, जिनका भी British कोई connection है, they are not loyal, तो उनको निकाल दो. तो उन्होंने जेम्स स्किनर को निकाल दिया फौज में से, और फिर जेम्स स्किनर आके ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में एक कमांडर बन गए. उन्होंने अपना ये स्किनर्स हॉर्स रेजिमेंट जो है वो उनका रेस किया हुआ है. उनका दिल्ली में बहुत, ही वाज वेरी कनेक्टेड टू दिल्ली बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली. ही बिल्ट अ हाउस इन दिल्ली, व्हिच ही यूज्ड टू स्टे इन, एंड ही बिल्ट सेंट जेम्स चर्च. सो
a very important monument of Delhi today. I mean, a living heritage of Delhi. It's Delhi's oldest church currently. So that was built by James Skinner. Thank you, ma'am. It was quite insightful to know about this. So I think we'll just wait for a couple of more minutes for one or two questions. I think एक दो क्वेश्चन आए थे बीच में. अगर आपको दिख रहे हो तो आप मुझे बताइए. मुझे नहीं दिख रहे हैं. Okay. There was a comment actually on the Mughal rule, and yeah, after the poet, there's no question. अच्छा अच्छा ठीक है. There's a quote, two जो भी lines गुजरा है, from हाँ हाँ, बताइए. दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है. बशीर बद्र की दो लाइनें लिख के दी है शशांक श्रीवास्तव ने. जी. हाँ बोलते तो है, पर मैं ये भी कहूंगी कि जो भी गुजरा है उसने दिल्ली को कुछ कुछ दिया भी है. इतने सारे लोग. दिल्ली हैज ऑलवेज बीन अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स. लोग बाहर से आए हैं यहाँ, और यहाँ कई सारे बस के अपना घर बना चुके हैं यहाँ. And over the centuries, lots of people have come from many different places. They have settled here. They have made Delhi their home, and they have contributed to Delhi's culture in many ways. And that continues to happen today also. So there are people who are, we've all come from somewhere else. I grew up somewhere else. I lived my whole adult life in Delhi, but I was not born here. But I still think of myself as a Delhi person, and I can see a lot of things to love in this city, which I hope that you can all love. I think Shashank sums up very well a true multicultural city. Absolutely. So every good city is a nice multicultural city. Yeah. I think that was a very good session with you, ma'am. Thank Thanks you. for I'm joining. so glad for everybody to have joined in, and thank you so much for hosting this. It was our pleasure. That it means for the unversed, ma'am is injured. She has fractured her foot. She still gave us some time to talk about Delhi, her favorite subject, and it was quite heartening to know all these tales behind Delhi. So thank you so much, ma'am. It was a real pleasure for us. And thank you to all the audience who joined us here. Thank you very much. Have a good weekend. Good night. Yeah, have a good weekend. Vande Mataram. Bye-bye. Bye.